এইখিনি কি বুলি কয় দাদা? এইখিনি আমাৰ ধনতলা পৰে। ধনতলা না? এই বাওঁহাতে মানে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়খন আছে ন? মোটামুটি ধৰক হয়, 200-300 মিটাৰ। ঠিক আছে। নমস্কাৰ, ৰ'দালি দৰ্শন ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক পুনৰবাৰ শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আজি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ত। এই বিশ্ববিদ্যালয়খন নলবাৰী গণেশ মন্দিৰৰ পৰা নলবাৰী ধমধমা পথৰ গণেশ মন্দিৰৰ পৰা মাত্ৰ 3.5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ধনতোলা নামৰ ঠাই এখনত এই বিশ্ববিদ্যালয়খন অৱস্থিত হৈ আছে। থোৰতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা সম্পৰ্কে দুআষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। বিশ্বৰ প্ৰাচীনতম লিপিশৈলী সংস্কৃত ভাষাৰ শিক্ষা আৰু চৰ্চাৰ অন্যতম পীঠস্থান নলবাৰীত কিছুসংখ্যক বিদ্বান অনুৰাগীৰ আবেদনত 2011 চনত অসমৰ প্ৰথমখন আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ 15ম সংখ্যক কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়খন স্থাপিত হয়। তাৰোপৰি নলবাৰীৰ শিক্ষা জগতৰ ইতিহাস সংস্কৃত শিক্ষাৰ ভেটিতেই সংৰচিত। মহামহোপাধ্যায় ধীৰেশ্বৰাচাৰ্যৰ পৰা আচাৰ্য মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰী, পণ্ডিত বিশ্বনাৰায়ণ শাস্ত্ৰী, পণ্ডিত ভৱদেৱ ভাগৱতী, খগেননাথ শাস্ত্ৰী, পণ্ডিত গংগানাথ শাস্ত্ৰী, বিপিন চন্দ্ৰ গোস্বামী আদিৰ দৰে স্বনামধন্য বিদগ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিতসকলৰ বাসস্থান এই নলবাৰী। সেয়ে ই নৱদ্বীপ নামে খ্যাত আৰু সেইবাবেই নলবাৰীক প্ৰজ্ঞানগৰী বুলি কয়। এইটোৱেই হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা প্ৰশাসনীয় ভৱন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ত সংস্কৃতৰ লগতে অসমীয়া বিভাগ, ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ আৰু দৰ্শন বিভাগো আছে। গতিকে যিসকলে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আগ্ৰহী তেওঁলোকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিব। আজি মোৰ উদ্দেশ্য বৈদিক সাহিত্যত মোহনীয় শৰতৰ কি বিচিত্ৰ ৰূপ তাকে জানিবৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগলৈ মই আহিছোঁ। ব'লকচোন আপোনালোককো মই এই সংস্কৃত বিভাগলৈকে লৈ যাওঁ। তেখেতসকলৰ মুখৰ পৰাই শুনিম শৰতৰ কি সুন্দৰ বৰ্ণনা। জীৱন আৰু আপোন আপোন প্ৰজ্ঞাৰে প্ৰজ্জ্বল, হে মোৰ পুৰাতন পৃথিৱীৰ সেউজীয়া আপোন মানুহ। মানুহ আছে বাবেই পৃথিৱী ধুনীয়া, পৃথিৱী আছে বাবেই মানুহ ধুনীয়া। সেই মানুহে কত কাল গছকি খচকি সৃজনৰ আৱেগত হাবি কাটি মন্দিৰ সাজিছে। জীৱনৰ মৃত্যুদীপ্ত তীব্ৰ প্ৰেৰণাত পাৰ হৈ উচ্ছল বাৰিধি, পাৰ হৈ গভীৰ অৰণ্য, দীপময় ভাৰত গঢ়িছে, কম্বোজত সাজিছে ওংকাৰ ধাম। হে মোৰ ভাবিকালৰ স্ৰষ্টা দ্ৰষ্টা বৈষ্ণৱ বিভূতি আপোন মানুহ। ইতিমধ্যে গ্ৰীষ্মকাল গৈ শৰতৰ আগমন ঘটিল। শৰৎ মানেই শান্ত সমাহিত এক পৰিৱেশ আৰু শৰৎ মানেই হৈছে শেৱালি কহুৱাৰে ভৰি থকা যেন এখন শীতল আৱৰণ। আৰু সেই শৰতক বিচাৰিয়ে মই অৰঙে দৰঙে ঘূৰি ফুৰিছোঁ। আজি আহি মই উপস্থিত হৈছোঁহি শৰৎ কেনেকৈ আহে, কিদৰে সংস্কৃত বৈদিক সাহিত্যত আছিলে সেই বিষয়ে আজি অকণমান কথা পাতিবৰ বাবে মই এনেদৰে নলবাৰী জিলাৰ যি আমাৰ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত যিখন আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। মোৰ এটা কথা জানিবলৈ মন গৈছে, মোৰ ওচৰতে এগৰাকী পাৰাধ্য ব্যক্তি আছে, তেখেতৰ পৰা মই কিছু কথা জানিম। কথা হৈছে কি, পাগলাদিয়াৰ পাৰত কেনেকৈ শৰৎ আহে, মোৰ কলঙৰ পাৰলৈ কেনেদৰে শৰৎ আহে আৰু লুইতৰ পাৰলৈ কিদৰে শৰৎ আহে, এই শৰতৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে মই বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি। আমি প্ৰথমতে ছাৰক নমস্কাৰ জনাই লৈছোঁ। ছাৰ, আপোনাৰ শুভ নামটো কওক। মোৰ নাম ৰঞ্জিত কুমাৰ তিৱাৰী। হয় হয় হয়, সৰ্বদৰ্শন বিভাগৰ মই মুৰব্বী অধ্যাপক। হয় হয়,
ঠিক আছে, আমি আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ৰদালি দৰ্শন ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰা। মোৰ এটা কথা জানিব মন যায় যে সেই বৈদিক যুগত বা একেবাৰে মহাকবি কালিদাসৰ দিনত হয়নে, আমাৰ শৰৎকালটো কেনেদৰে বৰ্ণনা হৈছিলে আৰু এতিয়া কেনেকৈ আহিছে? আমি যিহেতু উজ্জয়িনীলৈ যাব নোৱাৰোঁ, গতিকে উজ্জয়িনীত কি পৰিৱেশত কালিদাসে শৰৎকালটো বৰ্ণনা কৰিছিলে, বা এতিয়া আমি বৈষ্ণৱ সাহিত্য পাৰ হৈ আহি আমাৰ আধুনিক সাহিত্যটো শৰৎকালটো কেনেকুৱা হয়নে, সেই তাহানি দিনৰ পৰা শৰৎকালৰ বিষয়ে যদি আমাক যিটো তাৰ ক্ৰম বিকাশ অকণমান কৈ দিলে ভাল লাগিব ছাৰ। असले जो हम लोग का जो शास्त्रीय यदि दृष्टि से देखते हैं तो शरम ददाति इति शरदः। शरम माने बाण, शरह होता है, शरह माने बाण। बाण बनाने का ये समय है, बाण इस समय में निर्माण होता है। और दूसरी बात कि इस शरद का ऋतु का वर्णन वैदिक युग से ही आया है, और शरद और नए संवत्सर, नया वर्ष की भी बात कही गई है। इसलिए आपने सुना होगा पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, इत भवे न शरदः शतम, भूयेम शरदः शतम। तो ये संवत्सर के लिए भी शरद ऋतु का वर्णन शरद के साथ आया, जोड़ा गया है इसको। इसका ये अर्थ होता है हमारे समझ से कि कभी शरद ऋतु से ही हमारा संवत्सर, हमारे नव वर्ष का आगाज होता था, ऐसा हम सोच सकते हैं। और फिर आप विभिन्न, जैसे आपने बताया वैदिक साहित्य में तो शतपथ ब्राह्मण में प्रचुर शरद वर्णन किया गया है। उसी तरह वाल्मीकि के रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में एक घटना घटती है जब ये बाली का वध होता है, तो उस समय में वर्षा ऋतु आ जाती है। जब भगवान राम सीता के खोज के लिए सुग्रीव से मैत्री करते हैं बाली वध के बाद, तो उसके बाद में वो बाली क्या नाम है, सुग्रीव जाकर और आराम से राज्य में अपना ये हो जाता है, भूल जाता है। तो पूरे वर्षा ऋतु बीतने के बाद में बात ये हुई थी संधि में, मैत्री संधि जो हुई थी, कि जब शरद ऋतु माने वर्षा ऋतु बीतने के बाद, क्योंकि ये बंदर भालू है, ये सीता की खोज करने कैसे जाएंगे, तो शरद ऋतु आने के बाद ही ये लोग जा सकते हैं बाहर, क्योंकि सब जगह पानी ही पानी था। तो उस समय वाल्मीकि रामायण ने भी बहुत अच्छा से उसका चित्रण किया है। और शरद ऋतु में क्या होता है, वाल्मीकि के यदि शब्दों में देखते हैं तो वर्षा जब बीत जाती है और काश एक घास होता है सरकंडा, तो उससे पूरा धरती पट जाती है और वो सफ़ेद कलर का होता है। हमारे विश्वविद्यालय में भी आप पीछे देख सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी अभी वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई है, और जो नदियों के जो जल थे बहुत ही वो मटमैले हो जाते हैं, वो स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और इस तरह से वहाँ पर वर्णन किया गया है। इसको शरद ऋतु को पतझड़ के नाम से भी हम जानते हैं। और ये बहुत क्या नाम है कि इसमें यदि आयुर्वेद की दृष्टि से आप देखते हैं, चरक संहिता की दृष्टि से देखते हैं, तो इसमें जैसे वर्षा ऋतु में गर्मी ज़्यादा थी, ग्रीष्म ऋतु में ये ज़्यादा थी गर्मी, और वर्षा ऋतु में क्या हुआ कि इसका गर्म और सर्द शरीर ये रहता है। तो इसमें सर्दी होने के कारण और शरद ऋतु में आतप बढ़ जाता है, सूर्य का आतप बढ़ता है, धूप बहुत तेज होती है, इसलिए ये हमारा क्या नाम है, पित्त वृद्धि होता है। और जब पित्त वृद्धि होता है तो उसमें आयुर्वेद में मना भी किया गया है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जो मांसाहारी है मांस त्याग कर दे, जो वसा का ज़्यादा, फैट्स का ज़्यादा यूज करते हैं वो त्याग कर दे, क्योंकि उससे पित्त बढ़ेगा। पित्त बढ़ेगा तो पाचन शक्ति अच्छे से काम नहीं करेगी। मांस में भी सुअर आदि का मांस का परित्याग करने के लिए शरद ऋतु में विशेष रूप से चरक संहिता में कहा गया है। और ये रात्रि में सोने के पहले त्रिफला चूर्ण खाने की बात किया गया है, क्योंकि इससे पित्त शमन होगा, और जब पित्त शमन होगा तो उसकी क्या नाम है कि शरीर में पाचन शक्ति मंद नहीं पड़ेगी और शरीर में एक नई ऊर्जा आएगी। और इस तरह से शरद का वर्णन महाकवि कालिदास ने भी ऋतु संहार में किया है। वो कैसी क्या नाम है छटा आती है, प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह से बिखरता है, वही नदी
नाले के सारे जल पवित्र निर्मल जिसे दिखते हैं, और नदी के पानी और कम जाता है। और पहले जो बाढ़ में जो हाहाकार ऐसा रहता है उस समय में नहीं रहता है। इस तरह से शरद वर्णन किया गया है। शरद ऋतु में असल में ये शरद ऋतु जो है इसका प्रारंभ में ही हम पितृ पूजन, देव पूजन के लिए हम इसको चयनित किए हैं। पितृ पूजन होता है, उसके बाद मातृ पूजन होगी, और ये जो नवरात्रि का पूजा आता है ये शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। और ये जो शारदीय नवरात्र है इसकी भी परंपरा बहुत लंबी है। आप पीछे से जाए तो देखिए रामायण काल में भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शारदीय नवरात्र का पालन किया था। फिर भगवान कृष्ण के कहने से पांडवों ने नवरात्रि का पूजन किया शरद ऋतु में, और उस समय में देवी में भी बहुत अत्यंत शक्ति रहती है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं शरद ऋतु में जितने देव देवी के पूजन की व्यवस्था हमारे हिंदू संस्कृति में किया गया है, और ज़्यादातर हमारे व्रत उपासनाएं और पूजा पाठ इस शरद ऋतु में ये किया गया है। इसलिए शरद ऋतु का अत्यंत ही ये है महत्व है। ঠিক আছে ছাৰ, বহুত ভাল লাগিছে এই কথাখিনি জানিলোঁ, আৰু আমাৰ শ্ৰোতাসকলেও গম পাব। মোৰ এটা কথা জানিব মন গৈছে, আমিতো উজ্জয়িনী যাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত আমি উজ্জয়িনী বুলি ক'লে এতিয়া ক'ত বুজি পাম আমি? मध्य प्रदेश में उज्जैनी है। ঠিক আছে, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শৰৎ মানেই হৈছে কহুৱা কোমল শুকুলা ডাৱৰৰ আৰে আৰে মেঘৰ আৰে আৰে সুন্দৰকৈ ঘূৰি ফুৰাৰ এক সময়। এই শুকুলা ডাৱৰৰ চাদৰত যেন আমি অৰঙে দৰঙে ঘূৰি ফুৰিছোঁ, আৰু সেই বিষয়ে আমি পিছত কথা পাতিম। মই আজি শৰতক বিচাৰি ফুৰিছোঁ, শৰৎ মোহনীয় শৰৎ। সেই শৰতৰ যি আনুষংগিক ছবি আছে, আমি আচলতে কি প্ৰাক বৈষ্ণৱ যুগত শৰৎকালটো কেনেদৰে আছিল, ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ যুগত শৰৎকালটো কেনেদৰে বৰ্ণনা কৰিছিলে, সংস্কৃত সাহিত্যত শৰৎকালটো কেনেদৰে আছিলে, সেই বিষয়ে শৰতক বিচাৰি মই এনেদৰে আগমন কৰিছোঁ, এনেদৰে ঘূৰি ফুৰিছোঁ। মোৰ সৌভাগ্য ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰাধ্যাপক, আচলতে শাস্ত্ৰী বুলি ক'ব লাগে সংস্কৃত ভাষাত, তেখেতক মই লগ পাইছোঁ। প্ৰথমতে ছাৰ আপোনাৰ শুভ নামটো কওক। মোৰ নাম ডক্টৰ ৰাতুল বুজা বৰুৱা। আপুনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ত কি বিভাগত আছে? মই সংস্কৃত সাহিত্য বিভাগত অধ্যাপনা কৰি আছোঁ। হয় 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 ছাৰ, মোৰ এটা কথা জানিব মন গৈছে, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁৱে যে প্ৰাক বৈষ্ণৱ যুগত হয়নে বৈদিক সাহিত্যৰ পৰা আমাৰ যি মহাকাব্যকেইখন আছে, সেই মহাকাব্যৰ যুগত বা সংস্কৃতৰ যি সাহিত্য আছে, সেই সংস্কৃত সাহিত্যত শৰৎকালটোক কেনেদৰে আমাৰ কবিসকলে বৰ্ণনা কৰিছিলে, সেই বিষয়ে যদি অকণমান কৈ দিয়ে আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকলে ভাল পাব। ধন্যবাদ। দৰাচলতে আমাৰ যি ভাৰতবৰ্ষত 6টা ঋতু দেখিবলৈ পাওঁ, তাৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰতিটো ঋতুৰ বৰ্ণনাই সংস্কৃত সাহিত্যত আছে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ শৰৎ ঋতুৰ বৰ্ণনা আমাৰ ৰামায়ণ মহাকাব্যত আছে। তাৰপিছত আমাৰ কবিকুল চূড়ামণি কালিদাসে তেওঁৰ ৰঘুবংশ মহাকাব্যত কৰিছে, আৰু লগতে ঋতুসংহাৰ কাব্যটো আমি অতি সুন্দৰ বৰ্ণনা দেখিবলৈ পাওঁ। বিশেষকৈ আমাৰ তেওঁৰ যিখন ৰঘুবংশৰ 4ৰ্থ সৰ্গত আমাৰ শৰতৰ অতি মনোমোহা ৰূপৰ বৰ্ণনা কৰিছে, আৰু আমাৰ যিখন ঋতুসংহাৰত যি 6টা ঋতুৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা আছে, আৰু ঋতুসংহাৰ কাব্যত আমাৰ কালিদাসে অতি শ্লেষ অলংকাৰৰ সহায়ত আমাৰ শৰতৰ অতি অনুপম বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ভৰ্তি কাব্যত আমি শৰতৰ অনুপম বৰ্ণনা পাওঁ। বিশেষকৈ এইটো কোৱা হৈছে যে ন তজ্জলং জন্ন পংকজ সুচাৰু পংকজম ন পংকজম তৎ অলিন সৎপদম ন সৎপদোসৌ ন যুগুঞ্জ জ ফলং ন গুঞ্জিত তন্ন জাহাৰ জন্মন। অৰ্থাৎ এনেকুৱা জল নাই যি জলত
পদুম ফুল ফুলা নাই, এনেকুৱা পদুম নাই য'ত নেকি ভোমৰা গুঞ্জন কৰা নাই, এনেকুৱা গুঞ্জন নাই যি গুঞ্জনে নেকি মানুহৰ মন হৰণ কৰা নাই। গতিকে এনেকুৱা অনুপম বৰ্ণনা আমি পাওঁ। আৰু তাত এইটো কোৱা হৈছে যে দিগ্বিজয়ৰ কাৰণে আমাৰ এই শৰৎ কালটো অতি সুন্দৰ, কাৰণ এই সময়ত সম্পূৰ্ণ বোকাময় মুক্ত হৈ থাকে, আমাৰ গগন সম্পূৰ্ণভাৱে মেঘধৰিত হৈ থাকে, নিৰ্মল হয়। গতিকে এই সময়ত দিগ্বিজয় কৰিবলৈ অতি সুন্দৰ বুলি কবিয়ে অংকন কৰিছে। ঠিক আছে ছাৰ। আজি কেইদিনমানৰ আগতে গোলকীয় যি উষ্ণতা বাঢ়িল, হয়নে, সেই গোলকীয় উষ্ণতাৰ পৰিসমাপ্তিৰ পিছত আজি দুদিন হৈছে মাত্ৰ অকণমান ঠাণ্ডাৰ পৰিৱেশ এটা আহিছে। কিন্তু আমি ভাবিব পাৰিম নেকি যে তাহানিৰ শৰৎ আৰু আজিৰ শৰতৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে? হয়, নিশ্চয় হৈছে। আৰু এই শৰৎকালটোৰ এতিয়া কিবা প্ৰাসংগিকতা আছেনে? হয়, আমাৰ ধাৰণা মতে আমাৰ যিটো এতিয়া গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বা আমাৰ যিটো ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ পুৰণি প্ৰাচীন সাহিত্যই যিখিনি আমাক নীতি নিৰ্দেশনা দি থৈ গৈছে, সেইখিনি আচলতে আমি পালন কৰিব পাৰিলে ভাল। বিশেষকৈ আমাৰ গছ গছনিৰ প্ৰতি যিটো আমাৰ দায়িত্ববোধ, সেইটো আমাক ৰক্ষা কৰিবলৈ ভাল। বা আমাৰ আনুষংগিক যিবোৰ আছে, যিবিলাকে আমাক অনবৰতে আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ লগত জড়িত, সেইবোৰ বিষয়ত যদি আমি মন দিওঁ প্ৰাচীন সাহিত্যই কোৱা অনুসৰি, তেতিয়া নিশ্চয় আমি সেই আগৰ দিনলৈ আমি আকৌ উভতি যাব পাৰিম। হয়, আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে কি ক'ব? সংস্কৃত অধ্যয়ন কৰিব লাগে নালাগে? সংস্কৃত যিহেতু আমাৰ দেৱভাষা, যাৰ সকলোবিলাক ভাষাই সংস্কৃতৰ পৰাই সৃষ্ট হৈছে, আমি সংস্কৃত পঢ়িব লাগে বুলি মই ভাবিছোঁৱেই। আপুনি কি ক'ব? মই এজন সংস্কৃতৰ ছাত্ৰ হিচাপে হওক বা শিক্ষক হিচাপে কওঁ, এইটোৱে কওঁ যে সংস্কৃতৰ প্ৰাসংগিকতা সদায় আছে। বিশেষকৈ মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষাৰ দিশৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কৃতৰ প্ৰাসংগিকতা কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰি। আনকি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত আমাৰ যিটো প্ৰাচীন ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা, সেইটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আৰু সেইকাৰণেই আমি অলপতে আমি কাগজত পাইছোঁ যে আমাৰ পাশ্চাত্যৰ দেশ এখনত গীতা অধ্যয়নটো বাধ্যতামূলক কৰিছে। গতিকে আমাৰ ভাৰততো আচলতে সংস্কৃত ভাষা অতি গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজনীয়। ঠিক আছে ছাৰ, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই সংস্কৃত নাজানো, তথাপি আপোনাক নমস্কাৰ বুলি মই কৈছোঁ। আপুনি মোক ভুল নধৰিব। ফোন কৰিছোঁ ছাৰ, মোৰ চেনেলটোৰ বাবে কিবা এষাৰ কৈ দিয়ক। মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে ৰ'দালি দৰ্শন। মোৰ এটা গীত আছে, বিচাৰি ফুৰিছোঁ অৰঙে দৰঙে হেৰুৱা হৃদয়ৰ ঠিকনা, ৰিঙিয়াই মাতিছোঁ উকিয়াই সুধিছোঁ মনৰে কথাবোৰ কোৱানা। এনেদৰে মই অৰঙে দৰঙে আপোন মানুহক বিচাৰি ফুৰোঁ। ছাৰ, মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে কিবা এষাৰ কৈ দিয়ক। চেনেলটোৰ নাম হৈছে ৰ'দালি দৰ্শন। আমাৰ যিটো ৰ'দালি দৰ্শন বুলি চেনেল আছে, এই চেনেলটোৰ মই উত্তৰোত্তৰ উৎকৰ্ষ কামনা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আটাইয়ে এইটোক অতি আদৰেৰে গ্ৰহণ কৰিব, মৰম স্নেহেৰে আগবঢ়াই নিব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ, পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দুগৰাকী মই শাস্ত্ৰীক লগ পাইছোঁ, ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। মই ইতিমধ্যে দুটামান কথা জানিলোঁ তেখেতসকলৰ পৰা। এতিয়া মোৰ জানিব মন গৈছে বৈদিক সাহিত্যৰ যি দুটা ভাগ আছে নহয়নে, সেই দুটা ভাগৰ পৰা কেনেদৰে শৰৎকালটোক কেনেদৰে বৰ্ণনা কৰিছিলে আমাৰ বৈদিক সাহিত্যত, সেই বিষয়ে অকণমান মই এখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনাৰ শুভ নামটো কওক। মোৰ ছবিলাল উপাধ্যায়। আপুনি কোন বিভাগত মই সংস্কৃত সাহিত্য বিভাগৰ। হয়, আপোনাৰ নামটো কওক। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव लोचन शर्मा और मैं इस विश्वविद्यालय के न्याय विभाग में कार्यरत हूँ। वाह, বঢ়িয়া। ন্যায় বিভাগত আপুনি কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আছে নহয়নে? তথাপি মই আহিছোঁ যে শৰৎকালটো আপুনি জানে হয়নে? শৰৎকাল যি হৈছে আমাৰ এতিয়া আহিছে, এই শৰৎকালটোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিয়ক যে বৈদিক যুগৰ পৰা কেনেকৈ আহিছিলে শৰৎকালটো। धन्यवाद। संपूर्ण विश्व में हमारे भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण स्थान है और हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में सबसे सुंदर हमारा भारतवर्ष है। और क्यों ये सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ 6 ऋतुएं
जैसा कि हमारे यहाँ वर्णित हैं 6 ऋतुएं होती हैं, वो 6 ऋतुएं हमारे भारतवर्ष में हम लोग उसका अनुभव करते हैं, उसका आनंद ग्रहण करते हैं और उसके प्रकृति का सौंदर्य का भी हम ग्रहण करते हैं। उसमें भी विशेष महत्व है भगवती जगत जननी माता कामाख्या की पुण्य भूमि जो यह असम प्रदेश है, जहाँ अविरल प्रवाहित होने वाली अनेक नदियाँ हैं, सघन वन हैं और रमणीय प्रकृति है और प्रकृति के साथ मनुष्य का तादात्म्य है। और इस प्रकृति के सौंदर्य में प्रकृति सबसे ज़्यादा प्रस्फुटित होती है शरद काल में। इसी कारण से शरद ऋतु का विशेष महत्व हमारे वैदिक साहित्य में भी मिलता है और हमारे अन्य साहित्यों में भी मिलता है। जैसा कि एक प्रसिद्ध वैदिक वाक्य है, जीवेम शरदः शतम शतम प्रब्रवाम शरदः शतम। तो इस प्रकार से यहाँ जो शरद जो यह शब्द आया है, यह शरद शब्द 100 शरदों को मैं देखूं ऐसा तात्पर्य है, मतलब 100 वर्ष की आयु हो ऐसा वहाँ पर तात्पर्य है। तो शरद ऋतुओं में शरद का ही ग्रहण क्यों किया गया, तो उसका मूल उद्देश्य यह है, उसका तात्पर्य अर्थ यह है, समस्त ऋतुओं में शरद ऋतु सर्वश्रेष्ठ है, इस कारण से शरद का वहाँ पर नामोल्लेख किया गया। शरद काल में शंकरदेव ने भी शरद वर्णन किया है। जी जी हाँ हाँ ठीक है, जी बोलिए, बिल्कुल। बोलिए। भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए और उन्होंने अपने अपने काव्यों में और अपनी अपनी कृतियों में प्रकृति के साथ मनुष्य का तादात्म्य, प्रकृति का सौंदर्य वर्णन किया है। और मुख्य रूप से यदि हम शरद की बात करें तो प्रकृति अपने यौवन को प्राप्त होती है शरद काल में। कालिदास ने ऋतु संहार में शरद का वर्णन अत्यंत सुंदर ढंग से किया है। हाँ, हाँ, इस प्रकृति को एक नायिका का हाँ, 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 स्वरूप दिया है। और शरद काल में होने वाली विभिन्न जो है प्रकृति के सौंदर्य को नायिका के सौंदर्य के रूप में वर्णन किया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यह शरद काल हम सभी के लिए सुखकारी होता है। इस समय न अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक ठंडी होती है। साथ ही साथ सभी जो प्रकृति है वो पुष्पित होती है, पल्लवित होती है, जिसके साथ ही साथ मनुष्य, क्योंकि प्रकृति के साथ उसका अत्यंत तादात्म्य है। वर्तमान स्थिति में हम प्रकृति से थोड़ा दूर हो गए हैं तो हम अनेक प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं। यदि हम प्रकृति के साथ जुड़े रहें तो उसके साथ साथ हमारा मन भी उसी प्रकार प्रस्फुटित होता है और आनंदित होता है। हम चारों तरफ देख सकते हैं, हमारे भी विश्वविद्यालय में इस समय प्रकृति कितनी प्रस्फुटित है और हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है, जिससे यह सुंदर दृश्य आप सभी देख ही सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि समस्त कवियों ने, विशेष रूप से मैं जो है कालिदास का ही नामोल्लेख करना चाहूँगा कि वह जो काव्य हैं, हमेशा जो भी काव्य होता है वह समाज का दर्पण होता है। समाज की जो मनस्थिति होती है, समाज की जो चिंतन धारा होती है, वही काव्य में परिलक्षित होती है और वो प्रतिबिंबित होती है। जब कवि प्रकृति का वर्णन इतने सुंदर तरीके से करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो परंपरा रही है वो प्रकृति के तादात्म्य की परंपरा रही है। प्रकृति को बात कर तो कोई साहित्य भी नहीं सृष्टि होता है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि विचार जब आपके आएंगे, सौंदर्य का जब आप दर्शन करेंगे तो प्रकृति में जाने प्रकृति को ही आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। और इस कारण से हमेशा हमें प्रकृति का संरक्षण करना होगा, प्रकृति के पास जाना होगा। हमें सौंदर्य का दर्शन हम कभी बंद कमरे में या एसी के बंद कमरे में इस सौंदर्य को नहीं देख सकते। हम उसको जब बाहर जाएंगे, अनुभव करेंगे, हमारे पुराने काव्यों को पढ़ेंगे, हमारी प्राचीन परंपरा को देखेंगे, हम अपने पूर्वजों को देखेंगे, ज्ञान परंपरा को देखेंगे, तो निश्चित रूप से हम उस आनंद से आनंदित हो सकेंगे। वर्तमान काल में प्रदूषण इत्यादि होने के कारण हम वातावरण में परिवर्तन को देख रहे हैं। यदि हम प्रकृति के साथ जुड़े रहें तो निश्चित रूप से हम उस परम वैभव को प्राप्त कर सकते हैं जो एक समय भारत को प्राप्त था। हम उस दिशा में आगे बढ़ते रहें, ऐसी ही मैं कामना करता हूं। और शरद काल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है हमारी परंपरा में। अमृत वर्षा उस दिन होती है, चंद्र दर्शन होता है, श्री कृष्ण का रासलीला भी है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण जी की रासलीला का भी वह काल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी, जो कि पूर्ण ब्रह्म हैं, 16 कलाओं से युक्त हैं, उसमें भी जो रास तत्व है और रास पंचाध्यायी है, इसका विशेष हमारे यहाँ महत्व है। तो और जिसका अभी भी हम सौंदर्य असम प्रदेश में मुख्य रूप से देख सकते हैं। भारत के अन्य किसी क्षेत्र में इस प्रकार का आनंद आप नहीं लेंगे शरद काल में, जितना कि हम असम प्रदेश में इसका आनंद लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। আপুনি ইমানখিনি কথা কোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ। মই অসমীয়া বুজি পাওঁ কিন্তু ক'বলৈ ক'বলৈ অলপ টান টান লাগে। পাওঁ। একো নাই, একো সেইকাৰণে নাই। হিন্দীত আমি কৈছিলোঁ। গোটেইকেইজনে হিন্দী ভাষীয়ে আছোঁ এতিয়া, তথাপিও ভাল লাগিছে। এখেতসকলক লগ পাই মোৰ খুব ভাল লাগিল আৰু এনেদৰে আমি শৰৎকালটো উদযাপন কৰিম। শৰতে সকলোৰে বাবে শান্তি সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে ৰদালি দৰ্শন ইউটিউব চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব, তাকেই কামনা কৰি আজি অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কুছ বলিয়ে लास्ट में। मैं आप लोगों ने मुझे संवाद करने का अवसर प्रदान किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही हमारे जो दर्शक हैं, आप सभी लोगों को शरद ऋतु की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद ऋतु में आप प्रकृति के पास जाएं और उस अमृत काल का आनंद लें, ऐसी मैं कामना करता हूं। सभी का जीवन उन्नत हो और मंगलमय हो। धन्यवाद। ধন্যবাদ সভিকো ধন্যবাদ। মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে মই বিদায় লোৱাৰ সময় আহি পৰিল। মই এতিয়া ওলাই আহি আছোঁ। শৰৎকালৰ কিছু তথ্য ল'লোঁ বৈদিক সাহিত্যৰ পৰা একদম আমাৰ ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ কাব্যলৈকে শৰৎকালটো কেনেদৰে সংস্কৃত সাহিত্যত আছিলে সেই বিষয়ে কিছু তথ্য ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই আহি আছোঁ এতিয়া। হে